Students? हेलो। ठीक है, सही है। अब बिल्कुल सही आवाज आ रही है साहब, स्टार्ट करें। मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स से। फहद मंसूर है। आई एम सीनियर रजिस्ट्रार वर्किंग इन एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी DIMC। ठीक है। सो टुडे द टॉपिक को इज प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। सो what is actually pre-operative assessment? Pre-operative assessment basically when the patient comes in the OR for the surgery, you have to go through the history of the patient. You have to go through the physical examination of the patient and certain investigations. यानी कि जो हम patient की labs वगैरह जो करवाते हैं, those things are included in the pre-operative assessment of the patient. So, like, what are the goals of pre-operative assessment? Why we should like do the pre-operative assessment? What is the advantage of pre-operative assessment? Any one of you can please tell me anything about it. If there is any idea about pre-operative assessment, like what's the purpose of doing it? Anyone? Yes, comorbids. Good. Minimize the risk of what? Appropriate method of anesthesia. Right. Good. Good. To prevent complications. What kind of complications we are talking about here? To render if the patient is fit for anesthesia. Yeah, basically, yes. This is all. This is one of the point. Arterogenic damage, airway obstruction. Yeah, okay. So these are the most important points that we have to cover in this lecture. And apart from that, what would be we would be doing? Like we'll start from the history of the patient. सो बेसिकली ये वही चीज़ें हैं जो आपने हिस्ट्री लेनी होती है पेशेंट की। जिस तरीके से आप वार्ड्स में जाते हैं, आप पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं। हमारे पास भी प्री ऑपरेटिव असेसमेंट क्लिनिक के अंदर पेशेंट आते हैं। वी हैव अ सेपरेट क्लिनिक फॉर दिस पर्पस, जिसके अंदर जो है हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बिफोर द सर्जरी टू गो फॉर टू डू प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ देम। एंड उसके बाद वहाँ से पेशेंट जाते हैं वापस अपने वार्ड के अंदर। एक दिन या 2 दिन या जितने दिन का उनका स्टे होता है वो स्टे करते हैं। फिर उसके बाद जो है ऑन टेबल आते हैं हमारे पास फॉर द सर्जरी। सो बेसिकली व्हाट वी आर covering in the pre-operative assessment is like this is the case. I want you guys to go through the case and let me know what is the diagnosis here and which kind of surgery we will be performing on this patient. Quickly please. बहुत सिंपल सा केस है और आजकल तो सर्जरीज बहुत होती हैं ये वाली, बल्कि यहाँ पे तो डायग्नोसिस भी मेंशन्ड है। Yes, laparoscopic cholelithiasis. Laparoscopic cholecystectomy, basically, cholelithiasis is the diagnosis. Cholecystitis is the diagnosis. So, what is the difference between cystitis and lithiasis? Inflammation is the cystitis and the stone is lithiasis. Yes. So we have this 43-year-old woman came for the cholecystectomy, which is being performed laparoscopically, not open, and she has some certain comorbids such as diabetes mellitus, and she is on oral hypoglycemics,
and PM with the complaints of vague abdominal pain and flatulent dyspepsia, which is being aggravated by taking heavy meals. So it is a typical scenario of polylithiasis, polycystitis, and they have performed all the investigations. And according to those investigations, the final diagnosis is polylithiasis. So this patient is here for the preoperative assessment. So basically, how do we start it? These are the goals of preoperative evaluation जो मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आप लोगों ने बताया था उसके बारे में कि what are the goals of preoperative assessment. That is, we have to document each and everything in the preoperative assessment paper, and we have to document the history of the patient. We have to document the physical examination of the patient as well, and we assess the patient's overall health status, if he or she is fit for the surgery or not. We will be uncovering the hidden conditions such as the diabetes mellitus, other comorbids such as hypertension, ischemic heart disease, and all those will be covered in the preoperative assessment of the patient. Yeah, this includes the detailed history of the patient, vitals, physical examination, all will be included and will come step by step in this presentation. So somebody was telling about the risk of the surgery. So perioperative risk is also determined in the preoperative assessment. We optimize the condition of the patient, such as if patient comes with high blood pressure or uncontrolled blood sugars, we'll have to optimize the patient before the surgery. There are certain limits. There are certain reference ranges at which like we have to postpone the case, and we have to tell the patient that he or she is not fit for the surgery, and we'll have to optimize her condition by staying in the ward and by taking certain medications, and will come back for the surgery after he or she has completely optimized her condition. So in elective cases, we should not take any kind of risk uh, so to start the procedure. So there is no hurry. मुझे ये बताएं कि जो कोलिसिस्टेक्टमी जो होती है, लेप्रोस्कोपिक और ओपन कोलिसिस्टेक्टमी, इज इट इलेक्टिव प्रोसीजर और एन इमरजेंसी? Elective, yes. Why not emergency? Patient is coming with pain and telling you that डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा एब्डोमेन में पेन है, मेरे मेरे बहुत ज्यादा दर्द है, लेकिन आप उसको इमरजेंसी के तौर पे क्यों नहीं ट्रीट करते? वाई इलेक्टिव? आंसर इज राइट, बट वाई? Patient is not dying, so it is not an emergency. But what is the logical reason behind it? Yes. It is not a life-threatening condition, but if the patient comes with acute cholecystitis or acute cholelithiasis, we will have to give something to reduce her pain. We will have to give something to reduce the inflammation as well. Why not we are going for the surgery in that acute phase? My question is that. When the patient comes with appendix, inflamed appendix, we call it is an emergency कि भाई जल्दी appendicitis हो गया, फौरन से surgery करनी है. Why not in cholecystitis? The reason behind is that that the pain and the inflammation of the gallbladder can be controlled in the acute phase by certain medications, and also the inflammation makes it difficult to separate the surrounding structures. Yes, this is one of the point, that in acutely inflamed gallbladder, it is find that it is very difficult to remove, as well as it can be treated by the antibiotics, and when the infection gets settled, we'll operate for the surgery, we'll operate for the polycystitis.
Okay. So what are the other goals? We develop an appropriate perioperative care plan for the patient. If the patient has certain changes in her airway, for example, if the patient comes with the fracture of mandible or the maxilla or any other bone or any other teeth or any other structures around the mouth, we'll have to make a appropriate plan for that patient as well, so that yeah, so we'll not have to like uh, face the challenges in the OT, and will uh, हम जो है अपने जो एनेस्थीसिया प्लान जो है उसको प्रॉपरली जो है हम एक वो दे सकेंगे कि हमारे पेशेंट जो है कहीं सफर ना हो. ठीक है. So why is anesthesia risky? Anyone? Why we tell the patients, why others tell the patient that it's not about surgery which is the main risk, anesthesia is the main risk? Why is that? Anyone? Yes, respiration is depressed, and we depress this respiration by giving certain medications. Miscalculated doses can kill the patient. Good, very good. What kind? Which stage 3? Respiratory depression. Yes. So basically, it depends what kind of anesthesia we are giving here. Like, if we are giving general anesthesia, there are certain risks of the general anesthesia. If we are giving spinal or regional anesthesia, there are risks associated with them as well. So difficult to oxygenate the patient and difficult to ventilate the patient can become a life-threatening scenario, and patient can die on the table. So why it is like necessary to give a proper plan, to make a proper plan for a patient? The main reason behind it is to avoid any kind of airway abnormalities, any kind of event that includes deoxygenation of the patient, and others are at the time of induction, that is at the time of going to sleep. So the hemodynamic stress response by giving the certain anesthetic agents, and at the time of laryngoscopy when we are putting the tube in, and when we are doing the intubation, there are certain surges in the blood pressure that we have to control, and we have to do the proper plan for that as well in the preoperative clinic. Anaphylactic reactions, yes, we will have to ask the history, proper history के पेशेंट से हमने ये जरूर पूछ लेना है पहले से कि भाई आपको कोई जो है वो सॉरी आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, आपको किसी मेडिकेशन से एलर्जी तो नहीं है. तो ये सारी चीजें जो है आपने पहले से पूछ लेनी है बिल्कुल. Okay, we'll skip this slide because it's not that much important. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री. आपने मेडिकल जो अपना करियर स्टार्ट किया होगा, 3rd ईयर से आपने जो है वार्ड में राउंड किए होंगे, उसके अंदर जो है सारी जो हिस्ट्री है वही हिस्ट्री बेसिकली आपने पूछनी होती है बाय आस्किंग फ्रॉम द बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द बायोडेटा ऑफ द पेशेंट. एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी द पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री which we will be asking from the patient. It's the same history. Yes, name, age, residence. This is included in biodata. Presenting complaint. Comorbids.
Systemic review. Good. Great. बिल्कुल यही यही सारी हिस्ट्री जो है आपने पेशेंट से पूछनी है आपके पास प्री ऑफ क्लिनिक में पेशेंट जब आएगा तो विल स्टार्ट विद द बायोडेटा। आपने रैपर्ड जो है पेशेंट के साथ मेंटेन करके रखनी है, तो इसमें जो है सबसे पहले आपने पेशेंट से हिस्ट्री पूछनी है और पेशेंट का बायोडेटा लेना है, पेशेंट की हिस्ट्री पूछनी है। हिस्ट्री में आपने सारी रेलेवेंट कंडीशंस के बारे में जरूर पूछ लेना है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन के बारे में पूछ लेना है। व्हाट इज द प्रेजेंटिंग कंप्लेन, इफ ही और शी इज कमिंग विद पेन और वॉमिटिंग और nausea or any other condition, we'll have to ask from the patient. Then we'll have to take the detailed history of that particular symptom and history of their comorbids, which is included in the past medical history usually. History of other surgeries as well, कि आपको पहले कोई सर्जरी आपकी हुई थी कि नहीं हुई थी, आपकी पहले जो है कभी आपको एनेस्थीसिया मिला है कि नहीं मिला, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट एनेस्थीसिया हिस्ट्री। बेसिकली एनेस्थीसिया पास्ट हिस्ट्री के अंदर हम क्या चीज पूछेंगे पेशेंट से? पास्ट एनेस्थीसिया हिस्ट्री में क्या पूछेंगे? How long it took to recover? Yeah, starting from like पहले आपको एनेस्थीसिया मिला था, what kind of anesthesia was that, on which procedure, like was it regional or was it spinal, were you put to sleep completely or were you awake during the surgery? ये सारी पीछे बिल्कुल complication major thing, that was there any kind of complication that doctor told you after the surgery कि ये इवेंट आपके साथ हुए थे, ये जरूर पूछ लेना। बिकॉज अगर कोई पेशेंट को एयरवे abnormality है या he was difficult to intubate, he was difficult to ventilate, so those things should be covered in this uh, pre-operative assessment. Okay. So past medical history, after we'll have to evaluate all the systems of the patient, including cardiovascular, respiratory, renal, and endocrine. Basically, all of the systems are important. Patient can come with this history of ischemic heart disease. Patient can come with the history of any lung pathology, including smoking and including other lung pathologies such as asthma, such as COPD, of all the obstructive and restrictive diseases. In renal disease, they can come with the metabolic abnormalities, coagulopathy, anemia, and all these things we will have to evaluate by taking appropriate history of the patient, history of diabetes, history of thyroid disease. Thyroid has a major impact on the airway obstruction, and we have to evaluate all the kind of swelling and all the kind of obstruction to the airway. So history of certain medications that the patient was taking for the any comorbids and other specific questions. Okay. पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, दैट के आपका कोई पहले ऑपरेशन हुआ था कि नहीं हुआ था तो कब हुआ था और क्यों हुआ था और कौन से एनेस्थीसिया आपको मिला था। पास्ट एनेस्थेटिक हिस्ट्री वी हैव कवर्ड इट। फैमिली हिस्ट्री इज important. Someone was telling about malignant hypothermia. I saw in the comments. What do you know about malignant hypothermia? What is the pathology behind it? Anyone? Malignant hypothermia. What does the name suggest? High fever. It's not actually high fever. It's increase in the temperature of the patient. And it is, yes, it is caused by anesthesia. Which anesthetic agent causes malignant hypothermia? Which anesthetic agent
halothane and succinylcholine. Very good. Very good. Abnormal ranitidine receptor leads to excessive calcium in the cell, cytoplasm, increasing temperature, and muscle rigidity. Very good. So basically, you guys know the pathology behind it. So we will have to ask the appropriate history before appropriate family history of the patient. Is there any history of malignant hypothermia? Is there any history of increased body temperature during the surgery of the patient as well as his family members? Family के बारे में पूछना जरूरी है क्योंकि family it is the genetic abnormality basically. So we will have to evaluate it. Yes, succinylcholine plus halothane. These two are the main culprits. Okay. So social history. Social history में basically will ask about the history of smoking and alcohol intake and other drugs, recreational drugs, if the patient is taking any. And apart from that, we'll have to evaluate his personal history as well. That is very important, in which included addiction, and there is a history of sleep as well. There is history of lack of appetite, if there is any. We'll have to evaluate all these things. No, we do use halothane right now, and yes, its use is very less if we compare it from other anesthetic agents such as like isoflurane or sevoflurane. Sorry, but at some centers in the Karachi as well as in other small cities, we are using halothane, and it has certain advantages. It also has some disadvantages, but it's being used here in Pakistan. So after personal history, we will have to ask the functional status of the patient. What do you mean by the functional capacity? Like आप उसको अगर मैं patient के आम अल्फाज में पूछूं कि we are asking about the functional status of the patient, what is we are asking, like हम क्या पूछना चाह रहे हैं? Anyone? Yes, stamina. Stamina for what? Playing football. How is the disease affecting your life? We are actually asking about the limitation of the physical activity of the patient. Basically, yes, stamina. So, like if there is lack of ability to climb any kind of stair or any kind of height, this patient has some limitation of the physical activity. So the New York Heart Association NYHA classification has been proposed for this purpose. What does it suggest? It suggests the perioperative risk of the patient for the surgery and its outcome. So we have 4 classes, and according to class 1, there is no limitation of the physical activity. According to class 2, mild symptoms only in normal activity. According to class 3, marked symptoms during the daily activities, asymptomatic only at rest. And according to class 4, severe limitations, symptoms even at rest. Class 1, we like the normal individual is included in the class 1. If patient has some limitation of the physical activity such as any kind of normal activity, if the patient has to climb some stairs, he will say that I can climb 2 or 3 stairs, but not more than that. There is some limitation of the physical activity in this patient will be included in class 2. Class 3, marked symptoms
during the daily activities, asymptomatic only at rest, such as if I tell the patient to climb 2 stairs, he'll say, no, I'll come by the lift. I cannot climb 2 stairs even. So he or she will be included in class 3. And what about class 4? Patient will be having symptoms at rest. He'll say कि मैं डॉक्टर साहब में बैठे बैठे जो है मेरी सांस फूलने लगती है. So you will get alert by this, and you will evaluate the patient according to her cardiac status and according to her respiratory status. So the New York Heart Association classification is used for the assessment of functional class of the patient. So any issues with this? All got it? समझ आ गया सबको ये वाला part? So that we can move on ahead towards the physical examination. Yeah, basically dyspnea. कि आपकी कितनी सांस फूलती है, आप वो सांस मतलब इतनी ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है कि आपसे काम नहीं हो पाता. So that is, it is for basically dyspnea. Significance is that we are assessing the functional status of the patient. If we are giving general anesthesia to the patient and the patient has symptoms of severe limitation even at the rest, that is class 4, so we will get alert by the fact that he or she will be challenging, or he or she will have to face the challenge in the post-operative period of the surgery. So we'll have to take cardiology or pulmonology together, and we'll have to arrange ICU for the patient for the post-op recovery as well. Okay. So the functional activity of the patient is calculated by metabolic equivalent task, that is MET scoring. So what is MET? Basically, MET is the metabolic oxygen consumption at rest. यानी कि सिंपल अल्फाज में मैं इसकी बात करूं कि एक इंडिविजुअल जो है कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है रेस्ट पे, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट टास्क. ठीक है. सो दैट इज एक्चुअली 3.5 ml oxygen per kg body weight into minute. That is per minute per kg body weight we are consuming 3.5 ml of oxygen. So we will have to calculate for the according to the weight of the patient. So if patient is falling into 1 to 4 mats criteria, that includes the standard light home activities such as walking around the house, या कोई घर में इधर से उधर चलना, या छोटी मोटी जो है कोई एक्टिविटीज कर लेना, that is included in 1 to 4 mats. And in 5 to 9 mats, basically we evaluate that the patient can climb a flight of stairs or walk up a hill, walk on the level of the ground at greater than 6 kilometers per hour, run a short distance, moderate activities such as golf, dancing, mountain walk. And if the patient has greater than 10 mats, he or she can perform strenuous sports such as swimming, tennis, bicycle, football, and can perform heavy professional work. So like आप लोग की एज में, मेरी एज में, हम सबकी एज में, like MET score should be greater than 10. Okay. If it's falling between the 5 and 9, it is fine, but according to the risk of anesthesia, patient will be falling in moderate anesthesia risk. If the patient has greater than 10 mats, he or she will be falling in low anesthesia risk. And if the patient has 1 to 4 mats, he or she will be falling in high risk of anesthesia. So we calculate the MET scoring by asking certain questions to the patient, and those questions are included in the history of the patient. So we'll go ahead and we'll evaluate the ASA classification. So what is ASA? ASA.
Anyone? American S से क्या होगा? American Society of Anesthesia, right? So American Society of Anesthesia has classified the perioperative health status of the patient into six categories basically. So हम आता है पेशेंट हिस्ट्री हम लेते हैं तो हम इसको पेशेंट को जो है एक लेबल कर देते हैं कि ये ASA1 है, ये ASA2 है, ये ASA3 है, 4 है, फला फला, ठीक है. So basically the ASA1 status is that the patient is normal healthy person, he or she doesn't have any kind of comorbid. ASA2 has is like patient has any kind of mild systemic disease. अगर मैं बोलता हूँ पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, पेशेंट को इस्कीमिक हार्ट डिजीज नहीं, पेशेंट को डायबिटीज है, इट इज दीज आर माइल्ड सिस्टमिक डिजीज which are being controlled by taking certain medications. Patient will fall into ASA2 criteria. Patients with severe systemic disease, यानी कि systemic disease are coming with their complications. For example, में कोई patient आता है बोलता है कि मुझे blood pressure है डॉक्टर साहब, मैं evaluate करूंगा कि if his blood pressure is being controlled by the medications or not. If yes, then he'll fall in ASA2. If not, and वो कहेगा कि मेरे ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है और साथ साथ मुझे जो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही हैं. फॉर एग्जांपल, patient will tell that I have some blurring of vision as well. I had a history of ischemic heart disease, or I had a history of stroke. So these all are the complications of hypertension. So patient will fall in ASA3 criteria. What is ASA4? Patients with systemic disease that is constant threat to life. ऐसे patient जो कि constant threat to ऐसी systemic diseases which are constant threat to life, such as ischemic heart disease, such as stroke, such as those nephropathies or any other diseases which are constant threat to life. अगर वो कंट्रोल नहीं की गई तो पेशेंट की मॉर्बिडिटी हो सकती है, मॉर्टेलिटी हो सकती है. अच्छा, ASA5 क्या है? मॉरिबंड पेशेंट हु आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव विदाउट ऑपरेशन. पेशेंट आ जाते हैं मॉरिबंड से, क्या मुराद है मॉरिबंड? व्हाट इज मॉरिबंड पेशेंट? व्हाट इज मॉरिबंड? व्हाट इज द वर्ड मॉरिबंड? एनीवन प्लीज? मॉरिबंड से ये मुराद है, मॉरिबंड का मतलब ये होता है कि ऐसे पेशेंट जिन या अबाउट टू डाई, जिनकी कोई वो नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो कि सर्जरी अगर जिनकी नहीं, जिन पे परफॉर्म की गई, दे विल नॉट सर्वाइव. एंड व्हाट इज ASA6? ब्रेन डेड पेशेंट. ब्रेन डेड पेशेंट जिनके जो है लाइक ब्रेन एक्टिविटी नहीं है, जिनके ब्रेन रिफ्लेक्सेस नहीं है, दोज गोना डाई. दोज उनका खाली हार्ट जो है वो एक्टिव है, वो परफॉर्म कर रहा है. So like those patients are being admitted in ICU or are being kept in ICU just for the purpose of organ donation. Okay. And if any kind of any patient comes with comes with emergency procedure, we'll use the prefix E for that, and we'll say the patient is ASA1E, ASA2E, 3E, 4E, 5E, 6E. We'll use the word E. So surgical risk stratification, we have identified the type of surgeries according to their risks. So certain surgeries are high risk, certain surgeries are intermediate risk, and certain surgeries are low risk. So what kind of surgeries, what type of surgeries are included in high risk? These are usually vascular surgeries, and they have reported cardiac risk of often greater than 5%. And these include aortic surgeries and other peripheral vascular surgeries. What are the intermediate surgeries? Intermediate surgeries basically include the intraperitoneal, such as we do laparotomies, intrathoracic surgeries, carotid and atherectomy, head and neck surgeries, orthopedic surgery, and prostate surgery. These are the intermediate risk surgery. The risk of cardiac
issues is between 1% to 5%, and some surgeries are low risk, and they have reported cardiac risk of less than 1%. They include endoscopic surgeries, superficial procedures such as procedures on skin, which don't include which don't need any kind of anesthesia, or can be done in the local. Cataract surgery, breast surgery, ambulatory surgeries. These are the risks according to the surgeries. You will have to skip this slide because it is very out of context. So the MET scoring is enough to assess the cardiac and respiratory status. Okay, now we'll come to the physical examination. History is almost completed, and we'll come towards the physical examination. Examination में the same old examination general includes we'll take certain vitals of the patient. Vitals में हमारे पास pulse आ जाती है, blood pressure आ जाता है. We'll assess the temperature of the patient and respiratory rate of the patient. We'll assess for any signs of raised JVP, peripheral edema, cyanosis, finger clubbing, pallor, jaundice, जो कि हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो कि मेडिसिन में हम करते हैं वही पूरा एग्जामिनेशन है इसके अंदर. सिस्टमिक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑफ द सीएनएस. हमारे पास पेशेंट वॉक करते हुए आ रहा है, हमें पता लग गया कि he doesn't have any kind of neuro deficit, so his CNS is intact, so there is no issue about it. So हमें उसमें डिटेल एग्जामिनेशन करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं होगी. प्री ऑपरेटिव क्लिनिक में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कंप्लीट डिटेल एग्जामिनेशन करें, लेकिन आप जो है certain points जरूर cover करेंगे. If he has any abnormality of the gait, you are seeing the patient coming with an abnormal gait, you will have to evaluate the patient if patient doesn't tell you anything about it. So the systemic examination includes CNS, cardiovascular. Cardiovascular में आपने vitals लेने से start करना है, and you'll come towards listening the heart sounds, and if you find any kind of abnormality in that, you will have to evaluate. And if the patient is telling you the history of ischemic heart disease or any other valvular abnormalities, you will have to ask and evaluate, and you will have to do certain physical examination relating towards the cardiovascular system. So respiratory systems, including the checking of oxygen saturation on the pulse oximetry, listening for the respiratory sounds, and listening for any abnormal sounds, auscultation, and will evaluate the rate of the patient and observe for any dyspnea or cyanosis. Okay, nutritional status of the patient, malnutrition, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पेशेंट का BMI लेना पड़ेगा. What is BMI? Anyone can define BMI? Body mass index. Yes. How do you calculate the body mass index? How to calculate body mass index? Body mass in what divided by height in what, in which units? Weight in kg divided by height in meter square, not in centimeter. Who is Hafsa? सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में होता है, मीटर स्क्वायर. Weight in kilogram divided by height in meter square. Good. So what is the normal range of BMI? (18 to 24). Good. ठीक है. So we will have to evaluate. We will have to state the nutrition and the malnutrition and obesity. We'll have to evaluate the BMI of the patient. ठीक है.
तो उससे आपके अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है जिनका बीएमआई बहुत ज्यादा आता है, मॉर्बिडली ओबीज हैं ओबीज, और बीएमआई की लास्ट वैल्यू मतलब कहाँ तक हम जाते हैं? इफ द पेशेंट हैज बीएमआई ऑफ ग्रेटर देन 70 डी है, ओबीज तो 30 से ज्यादा होता है, 30 से 35, 30 से 40, morbidly obese is greater than 40, and between 40 to 50 is morbidly obese. 40 to 50 is morbidly obese, 50 to 60 is super obese, 60 to 70 is super obese, and greater than 70 is hyper obese. आप लोग जो है बीएमआई की क्लासिफिकेशन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन में कुछ चेंजेस हैं, और जो है ये एग्जाम में आ सकता है. इट इज वेरी कॉमन इन एग्जाम टू आस्क एग्जामिनर्स टू आस्क अबाउट द बीएमआई ऑफ द पेशेंट. ठीक है, ओके. सो आपने स्किन की कलर पिगमेंटेशन कोई है वो देख लेनी है. ठीक है, आपने साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट असेस कर लेना है कि इफ ही शी हैज एनी हिस्ट्री, या वो आपने आपको आ रहा है तो आपने उसको पिक कर लिया कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एंशियस है, या कोई आपको लग रहा है कि उसका साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होना चाहिए, तो वो अकॉर्डिंगली आपने करवाना होगा. ठीक है, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी एनेस्थीसिया एग्जामिनेशन में आती है, दैट इज द एयरवे एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट. ठीक है, and we will discuss it in detail. What is the airway examination of the patient, what are the components of it, and we'll look for the veins of as well, if he or she is easy to cannulate or not. If there is difficulty in vein cannulation, we will mention it in the preoperative paper that here the patient is difficult to cannulate, and we'll have to act accordingly. Okay. So obstructive sleep apnea will ask certain questions for evaluation of the OSA if the patient is obese and there is history of sleep apnea. So we will have to evaluate by asking certain questions, and those questions include the stop bang questionnaire. Basically stop bang जो है आपने क्वेश्चंस पूछने होते हैं, उसके अंदर जो है हमारे पास सर्टेन क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एस से स्नोरिंग है, टी से टायर्डनेस, दैट इज द डेट. पेशेंट दिन के वक्त जो है बहुत टायर्ड रहेगा क्योंकि उसकी रात की नींद पूरी नहीं हुई होगी, तो वो डे टाइम स्लीपीनेस उसको होगी. सो ही विल बी टायर्ड थ्रू आउट द डे. ही विल बी हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्नोरिंग. ओ से क्या आएगा? ओ इज ऑब्जर्व्ड, दैट इज ऑब्जर्वेशन फॉर द apnea episodes. P say pressure, blood pressure. So stop. And what is bang? B say BMI. Patient's BMI should be greater than 35 to get included in stop bang criteria. His age will be greater than 50. Neck circumference should be greater than 40 centimeter or 15.7 inches, and gender should be male. So high risk कब होगा? If yes to greater than 3 items, any one of them, the patient is high risk for obstructive sleep apnea. So those patients who are high risk for the obstructive sleep apnea have difficulty in the post-operative period as well. So usually जो स्लीप एपनिया के पेशेंट्स होते हैं वो बाईपैप यूज करते हैं, वो घर में अपने पास उनके पास बाईपैप मशीन होती है, क्योंकि वो उसके बगैर जो है सांस नहीं ले पाते, या वो एपनिया के एपिसोड्स में चले जाते हैं. So we'll tell the patient that you will have to bring that BiPAP machine with yourself, and we'll use that BiPAP machine in the post-operative period so that you don't get sleep apnea, you don't get your airway obstructed in the post-operative period. So after doing the physical examination of the patient, we'll order certain investigations.
And those investigations include hemoglobin and blood count, urine tests, especially for sugar, ketones, and protein, blood urea and creatinine, serum electrolytes, blood glucose, EKG, echocardiogram, X-ray. अब कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि एक पेशेंट आ रहा है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के लिए, जो कि हमारा सिनेरियो था, और हमने बोला कि हमने इसकी सर्जरी करवानी है, तो हम इसमें से क्या क्या ऑर्डर करेंगे? एनीवन? हर कोमॉर्बिड्स वर ओनली वन, उसके उन्हें जो है डायबिटीज मेलाइटिस था। तो आप इसमें से कौन कौन से ब्लड टेस्ट जो है ऑर्डर करेंगे? प्लीज। ओके, urine test for sugar and ketones, ECG, all of them? No, not necessarily. Blood glucose. Okay, आप लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के आ रहा है पेशेंट, तो यस, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, तो you'll have to have hemoglobin and the blood count, urea, creatinine, and electrolytes, because patient will be taking certain medications जो कि और patient diabetic भी है, तो उनमें electrolyte abnormalities are very common, so you have to evaluate it. And ECG as well, depending upon the age of the patient. Usually in above 50 years old, we order the ECG. If the patient has any kind of history of hypertension, we'll order ECG. If the patient has any history of ischemic heart disease, we'll order ECG plus echocardiogram as well, and chest X-ray. If the patient is being given general anesthesia, you got to have chest X-ray. ठीक है? Other special investigations may be ordered and may when indicated, and we'll move on. Okay. So the detailed airway assessment, basically जब हमारे पास पेशेंट आते हैं एग्जामिनेशन के लिए, हमने एयरवे जरूर उनका असेस करना होता है. सो इट स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जर्विंग द पेशेंट. हम पेशेंट को देखते हैं, उसके चेहरे को देखेंगे कि इफ ही और शी हैज बिग हेड, जिनकी बियर्ड होती है उनमें डिफिकल्ट वेंटिलेशन होती है, क्योंकि यू कैन नॉट assess the length of the patient. And apart from that, if the patient is obese, you will have in mind कि इस पेशेंट की इंट्यूबेशन जो है वो डिफिकल्ट हो सकती है, इस पेशेंट का एयरवे जो है वो डिफिकल्ट हो सकता है. सो these are the small things which we observe by just looking at the patient. If the patient has a small mouth, limited mouth opening, we'll start the patient by telling to open the mouth. हम पेशेंट को जो है उनको बोलेंगे कि अपना मुंह खोल के हमें दिखाएं. We'll see the structures and we'll do the Malabarity scoring. What is Malabarity scoring, and for what purpose it is being done? Anyone? Malabarity scoring? किसी को नहीं पता Malabarity के बारे में? एयरवे असेसमेंट के लिए यूज होती है. हाउ टू डू इट? हम क्या करते हैं इसमें कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि प्लीज ओपन द माउथ. आपने पेशेंट के लेवल पे रहना होता है, ठीक है? वो जब अपना मुंह खोल के आपको दिखाएंगे, तो बाय टेकिंग अ टॉर्च हम पेशेंट का जो है स्ट्रक्चर्स को इवेल्युएट करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स are visible. Usually there is 4 grading of Malabarity scoring. There are 4 grades. If the patient is labeled as Malabarity 1, तो उनके हमें 4 स्ट्रक्चर्स हमें विजिबल होंगे. एक होता है फॉशल पिलर्स, यूवुला, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट. अगर ये 4 स्ट्रक्चर्स हमें मिल रहे हैं, फॉशल पिलर्स, यूवुला, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, तो ये हो गया Malabarity स्कोर 1. अच्छा,
फिर इसके बाद हम अगर बात करें कि हमने माउथ ओपन कराया, हम करेंगे मालमपट्टी स्कोर 2 है, तो इसके अंदर हमें फॉशल पिलर्स नहीं दिखेंगे, हमें यूवला दिखेगा, हमें जो है सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट दिखेगा, दैट इज मालमपट्टी स्कोर 2। हम मालमपट्टी स्कोर 3 के अंदर आपको सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट दिखता है, यूवला नहीं दिखता। और मालमपट्टी स्कोर 4 के अंदर आपको खाली हार्ड पैलेट दिखेगा and it will be labeled as difficult intubation. Score 3 and 4 is labeled as difficult intubation. Score 1 and 2 is being labeled as optimum condition for intubation. So basically हमने इसमें सारी चीजें ये कवर की कि आपने प्रेजेंस ऑफ बेड देखनी है, स्मॉल माउथ, लिमिटेड माउथ ओपनिंग, रिसीडिंग चिन, अगर पेशेंट किसी की पेशेंट की चिन अगर आगे की तरफ रिसीड कर रही है, he will be having difficulty in ventilation and intubation as well. High arched palate, large tongue, bull neck यानी कि जिनके neck circumference ज्यादा होता है, obesity, large breast। अच्छा, large breast होने की वजह से क्या होता है कि those when the patient lies supine, जब पेशेंट को आप supine lie कराते हैं, तो जो ब्रेस्ट का जो फैट होता है या ब्रेस्ट का जो मास होता है वो पेशेंट की नेक के ऊपर कंप्रेस करने शुरू हो जाता है, यूजुअली इन ओल्ड एज फीमेल्स, तो उसमें ये मसले हो सकते हैं। तो आपको जो है इंट्यूबेशन करते वक्त जो है डिफिकल्टी फील हो सकती है, तो उसमें आपने जो है बहुत कॉशियस होके अपने जो है डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रेडी रखना होगा। हर सिनेरियो में आपने डिफिकल्ट इंट्यूबेशन को जो है प्रेफरेंस देनी होगी जहां पे यू विल फील द पेशेंट हैज डिफिकल्ट एयरवे, एंड वील हैव टू इवैल्यूएट द डेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट एज वेल। So this is the Malabarity score, class 1, class 2, class 3, class 4. In class 4 only hard palate is visible. In class 3 there is hard palate as well as the soft palate, some part of the soft palate as well. In class 2 hard palate, soft palate and uvula. In class 4 partial pillars, uvula, soft palate and hard palate. So this is Malabarity score, and number 2 is thyromental distance, the distance from mentum, that is chin, and thyroid cartilage. Thyromental distance, basically if it is greater than 6.5 centimeter, so the intubation will be easy, labeled as easy. If it's between 6 and 6.5 centimeter, laryngoscopy intubation might prove difficult but possible. If it is less than 6 centimeter, it is labeled as difficult या impossible intubation. The other parameter is inter-incisor gap. हम पेशेंट की माउथ ओपनिंग बेसिकली इसमें चेक करते हैं. So how we do it? We tell the patient to place his or her fingers in the mouth, और अगर वो 3 से ज्यादा उंगली उनके मुंह के अंदर चली जाती हैं तो it is optimal mouth opening and patient की intubation difficult होने के chances कम हो जाएंगे. Less than 3 centimeter difficult intubation and less than 2 centimeter difficult LMA insertion. What is the difference between intubation and LMA insertion? LMA क्या होता है? It is laryngeal mask airway. It is a type of airway that is being used for anesthesia. Okay. So these are the some guidelines, pre-operative guidelines for the medications, कि हमने कौन कौन सी medications जो है रोकनी होगी और कौन कौन सी medications जो है हमने continue रखनी होगी. Basically when you will be studying these slides, you will have some questions के इतनी detailed जो है हम एक एक मेडिसिन के बारे में पूछेंगे आपसे एग्जाम में, तो नहीं, इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा. बेसिकली यू गॉट टू नो अबाउट सर्टेन मेडिकेशंस दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग पेशेंट फॉर एग्जांपल किसी को ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है और वो उसके लिए मेडिकेशन ले रहा है, तो दोज मेडिकेशंस विल बी कंटिन्यूड इन द पेरीऑपरेटिव पीरियड एज वेल. आपने पेशेंट को कहना है कि आपने वो मेडिकेशंस कंटिन्यू करनी है, स्टॉप नहीं करनी. ठीक है. और इसके अलावा जो है डायबिटीज की जो मेडिकेशंस है उसके अंदर जो है
पेशेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ले रहे होते हैं, तो आपने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को मॉर्निंग में स्टॉप करवाना है, और जो है इंसुलिन को जो है आपने कंटिन्यू रखना होता है, जो कि वो भी उसकी रेजिम पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी रेजिम जो है वो दी है और कौन सी देनी है. सो जस्ट गो थ्रू ऑल दीज मेडिकेशंस एंड जस्ट रिमेंबर देम कि कौन सी मेडिकेशंस आपने कब स्टॉप करनी है, क्योंकि एक एक मेडिकेशन यहाँ पे डिटेल में मैं बताने लगूंगा तो काफ़ी इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. सो आपने इसको एक मरतबा पढ़ लेना है और सारी जो है मेडिकेशंस के बारे में याद कर लेना है कि कौन कौन सी मेडिकेशंस जो हैं स्टॉप करनी होती हैं और कौन कौन सी देनी होती हैं, so that you can just have a rough look around it. And apart from that, अगर कोई patient आ रहा है with the history of epilepsy or history of fits, so those medications will be continued in the post-operative perioperative period as well. Thyroid medications, yes, thyroid replacement medications. If the patient has high TSH, that is low thyroid hormones, he will be taking thyroxine, so he or she will continue to take the medications. We'll come towards the NPO guidelines. हम ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है. NPO गाइडलाइंस के लिए बेसिकली हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो ये हैं कि आपने जो है निल बाय माउथ पेशेंट को रखना होता है फॉर द पर्पस ऑफ एनेस्थीसिया, बिकॉज यू आर गिविंग मसल रिलैक्सेंट्स एंड यू आर गिविंग द सेडेटिव एजेंट्स जो कि एयरवे के प्रेशर को बढ़ाएंगे और एब्डोमिनल प्रेशर इन टर्म बढ़ेगा. वो कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जब आप वेंटिलेट करते हैं, जब आपने इंटुबेट नहीं किया होता है पेशेंट को, व्हेन यू आर वेंटिलेटिंग द पेशेंट यू आर पुटिंग सम काइंड ऑफ एयर इनटू द इसोफेगस एज वेल. सो द इसोफेगस के अंदर जब एयर जो अगर फॉर एग्जांपल जाती है तो पेशेंट की रीगर्जिटेशन एंड वॉमिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो सर्टेन टाइम जो है वो आपने देना होगा एनपीओ पूरा होने के लिए. तो उसके अंदर जो है हमारे पास क्या होता है कि हमने जो है इसको क्राइटेरिया इस तरह बना दिया है कि हैवी मील्स अगर पेशेंट ले रहा है कोई भी, फॉर एग्जांपल सॉलिड फूड्स हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं जिसमें लाइक फास्ट फूड एंड द फूड विच वी आर टेकिंग एट होम, तो उसके अंदर जो है 8 आवर्स का एनपीओ होना जरूरी है. इफ यू आर टेकिंग एनी, इफ द पेशेंट इज टेकिंग लाइट मील्स, फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि हम जो है बिल्कुल लाइट मील दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड मिल्क एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, सो उसके अंदर 6 आवर्स का एनपीओ जो है होना चाहिए. और अगर इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क है या नॉन ह्यूमन मिल्क है, फॉर एग्जांपल काउज या बफेलोज मिल्क है, तो उसके अंदर भी 6 आवर्स का एनपी होगा. ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो है वो 4 आवर्स का एनपी होता है, और क्लियर फ्लूइड्स के अंदर जो है वो 2 आवर्स का एनपी होता है. सो आपने ये एवेल्युएट करना है पेशेंट से हिस्ट्री के अंदर ही कि आपकी जो है इस तरीके का एनपीओ जो है वो होना चाहिए. एंड वी हैव टू राइट द pre-operative assessment of the patient in a written form, and we have to document all the history and all the physical examination and all the medications which patient is taking in this patient की previous history, patient के previous anesthesia experience या patient का कोई अगर कोई complication अगर पहले हुई थी तो वो सारी चीजें everything should be documented and everything should be in a paper, जो कि एक पेपर के फॉर्म में आपके पास होना चाहिए. जो पेशेंट जो है प्री ऑप असेसमेंट पेशेंट करवा के लेके आते हैं उनके पास एक पेपर होता है, उसके अंदर सारे के सारे जो है डिटेल्ड हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको एनेस्थीसिया प्लान फॉर्मुलेट करने में हेल्प करते हैं. सो दिस इज द पेपर. This paper is from my residency period. It is from Civil Hospital Karachi and includes the pre-operative assessment of the patient. इसमें पूरी की पूरी history है. I want you guys to just copy and just learn this patient. आपको पूरा pre-operative assessment खुद ब खुद समझ आ जाएगा. इसके अंदर एक एक चीज मेंशन हुई हुई है कि आपने जो है किस तरीके से जो है पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस पूछने हैं, किस पेशेंट की जो है सर्टेन डिटेल्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशंस मेंशन्ड है, एंड पेशेंट का ESA स्टेटस, पेशेंट की जो डॉक्यूमेंट NYHA क्लासिफिकेशन, ऑल दीज थिंग्स या प्री ऑप असेसमेंट पेपर और रिकॉर्ड फॉर्म. सो थैंक यू. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क, and this is it.
किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क इफ देयर इज सम टाइम. नो क्वेश्चन. कोई ऐसा पॉइंट जो समझ ना आया हो? ओके, सो थैंक यू. इसके बाद सर ठीक है. ओके सर टेक केयर, अल्लाह हाफिज.